सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो पिछले कक्षाओं में हमने सर्वनाम शब्द के शब्द रूप तथा हलंत शब्द के शब्द रूप सभी देखा था। तो इस भाग में हम अजंत शब्द के शब्द रूपों को देखेंगे। तो सबसे पहला है बालक शब्द का शब्द रूप। ठीक, तो शुरू करते हैं इसी क्रम को। देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इस तरफ विभक्तियाँ। ठीक, ये तो आप सबको ज्ञात ही है। तो सीधे शुरू करते हैं शब्द रूपों को। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक, तो बालिका शब्द का बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकं, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। फल शब्द का फलं, फले, फलानि, फलं, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्यां, फलैः, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलानि। रमा शब्द का रमा, रमे, रमाः, रमां, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। देखिए स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति में जो सु होता है वह दंत्य स का सु होता है। ठीक, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। कवि शब्द कविः, कवि, कवयः, कविं, कवि, कविन्, कविना, कविभ्यां, कविभिः, कवये, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। मति शब्द ठीक, मतिः, मति, मतयः, मतिं, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्योः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मत्योः, मतीषु। हे मते, हे मति, हे मतयः। इस प्रकार से वारी शब्द का ठीक, तो वारी, वारिणी, वारीणि, वारी, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारीणां, वारिणी, वारिणोः, वारिषु। वारी, वारिणी, वारिणी। ठीक, नदी शब्द का नदी, नद्यो, नद्यः, नदीं, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। फिर धेनु शब्द का धेनुः, धेनु, धेनवः, धेनुं, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः, धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः, धेनोः, धेनुवोः, धेनूनां, धेनु, धेनुवोः, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनुः। फिर शिशु शब्द का देखेंगे कि शिशुः, शिशु, शिशवः, शिशुं, शिशु, शिशून्, शिशूना, शिशुभ्यां, शिशुभिः, शिशवे, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशोः, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः, शिशोः, शिशोः, शिशूनां, शिशौ, शिशवः, शिशुषु। हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। मधु शब्द का मधु, मधुनि, मधुनि, मधु, मधुनि, मधुनि, मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः, मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधूनां, मधुनि, मधुनोः, मधुषु। हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि। पिता शब्द ऋकारांत शब्द तो आना ही आना है परीक्षा में। तो पितृ शब्द को देखेंगे
पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु। हे पितः हे पितरौ हे पितरः। फिर मातृ शब्द माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातॄन् मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु। हे माता हे मातरौ हे मातरः। फिर दात्री शब्द दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दात्रीन् दात्रा दातृभ्यां दातृभिः दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः दातुः दात्रोः दातॄणां दातरि दात्रोः दातृषु। हे दातः हे दातारौ हे दातरः। फिर द्वितीय शब्द का पुंगलिंग में द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः द्वितीयं द्वितीयौ द्वितीयान् द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः द्वितीयस्मै द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्मात् द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीयस्मिन् द्वितीययोः द्वितीयेषु। हे द्वितीय हे द्वितीयो हे द्वितीय। फिर द्वितीय शब्द स्त्रीलिंग में द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः द्वितीयां द्वितीये द्वितीयाः द्वितीयया द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभिः द्वितीयायै द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभ्यः द्वितीयायाः द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभ्यः द्वितीयायाः द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीयायां द्वितीययोः द्वितीयासु। यहाँ पर यासु। हे द्वितीये हे द्वितीये हे द्वितीयाः। फिर द्वितीय शब्द नपुंसकलिंग में द्वितीयं द्वितीये द्वितीयानि द्वितीयं द्वितीये द्वितीयानि द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः द्वितीयस्मै द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्मात् द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयानां द्वितीयस्मिन् द्वितीययोः द्वितीयेषु। हे द्वितीय हे द्वितीय हे द्वितीयानि। फिर सखी शब्द सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सखौ सख्योः सखीषु। हे सखे हे सखायो हे सखायः। नृ शब्द ना नरो नरः नरं नरो नृन् नरो नृभ्यं नृभिः नरो नृभ्यं नृभ्यः नूः नृभ्यं नृभ्यः नूः नरोः नृणां नरि नरोः नृषु। हे न हे नरो हे नरः। स्वः शब्द ठीक स्वः स्वौ स्वे स्वं स्वौ स्वान् स्वेण स्वाभ्यां स्वैः स्वस्मै स्वाभ्यां स्वेभ्यः स्वस्मात् स्वाभ्यां स्वेभ्यः स्वस्य स्वयोः स्वेषां स्वस्मिन् स्वयोः स्वेषु। हे स्व हे स्वौ हे स्वः। तो यह स्व शब्द खुद को बोध कराने का शब्द है, अपना या फिर निज आत्मा इत्यादि, मतलब खुद को बताने का। और ये जो स्वश्री शब्द है यह सिस्टर को भगनी को बताने का शब्द है। स्वसा स्वसारौ स्वसारः स्वसारं स्वसारौ स्वश्रीः स्वस्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः स्वस्रे स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः स्वसुः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः स्वसुः स्वस्रोः स्वश्रीणां स्वसरि स्वस्रोः स्वश्रीषु। हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसारः। फिर अक्षी शब्द ठीक अक्षी अक्षिणी अक्षीणी अक्षी अक्षिणी अक्षीणी अक्षणा अक्षिभ्यां अक्षिभिः अक्षिणे अक्षिभ्यां अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षिभ्यां अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षणोः अक्षणां अक्षिणी अक्षणोः अक्षिषु। हे अक्षी हे अक्षी हे अक्षिणी। ठीक, इस प्रकार से हमने सर्वनाम शब्दरूप, हलंत शब्दरूप, अजंत शब्दरूप सारे देख लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो कक्षा जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। नमो नमः।